के नीचे, यानी कि एकदम कंफर्टेबल जोन में। लेकिन जैसा वृंदा जी भी कह रही थी कि आगे बढ़ने के आसार हैं, इस वजह से गवर्नर साहब की कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होती दिख रही है। रिकवरी आपको लौटती दिख रही है बाजार में भी और बैंक निफ्टी में भी है। अब फिर से 51,100 के करीब पहुंचने की कोशिश। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, season's greetings to each one of you. This is the 51st meeting of the Monetary Policy Committee, that is the MPC, and this is how it goes. The flexible inflation targeting framework has completed 8 years since its introduction in 2016. This is a major structural reforms of 21st century India. It stands out for its committee approach to decision making, transparency of policy making process and communication, accountability hinging upon quantitatively defined inflation target, and operational independence. Over the years, the framework has matured across various interest rate cycles and monetary policy stances. When I look back, I can say with confidence that the flexible inflation targeting has served us well over the years and has proved its mettle. It brought about an era of price stability in the pre-COVID-19 period, with inflation averaging around the target rate of 4%. Thereafter, despite continuing global turmoil from multiple sources in the last 4 years or so, the flexibility embedded in the flexible inflation targeting framework has helped us to effectively address these unprecedented challenges while supporting growth. Monetary policy in India was able to respond to the economic slowdown decisively and swiftly in the wake of the COVID-19 pandemic, and again preemptively during the buildup of inflationary pressures after the war began in Ukraine in early 2022. The prevailing well-balanced growth inflation dynamics is indeed a testimony to the success of this monetary policy framework. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on, and this time, as you would be aware, this time we have 3 new external members in the MPC. The Monetary Policy Committee with 3 new external members met on 7th, 8th and 9th October. And after assessing the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they stand at 6.75%. Further, the MPC decided unanimously to change the stance, that is the stance of the monetary policy, to neutral, and also decided to, let me read it again. The MPC decided unanimously to change the stance to neutral and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. The MPC noted that currently the macroeconomic parameters of inflation and growth are well balanced. Headline inflation is on a downward trajectory, though its pace has been slow and uneven. Going forward, the moderation in headline inflation is expected to reverse in September and likely to remain elevated in the near term due to adverse base effects, among other factors. Food inflation pressures could see some easing later in the financial year on the back of strong Kharif sowing, adequate buffer stocks, and good soil moisture conditions, which are conducive for Rabi sowing. Adverse weather events continue to pose contingent risks to food inflation. Core inflation, on the other hand, appears to have bottomed out. Fuel component of the CPI remains in contraction. Domestic growth
has sustained its momentum with private consumption and investment growing in tandem. Resilient growth gives us the space to focus on inflation so as to enable its durable descent to the 4% target. In these circumstances, the MPC decided to remain watchful of the evolving outlook in the coming months. Keeping in view the prevailing inflation and growth conditions and the outlook, the MPC considered it appropriate to change the stance to neutral and to remain, I repeat, and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target, while of course supporting growth. I would now turn to an assessment of the growth and inflation situation. First, let me talk in brief about the global growth conditions. The global economy has remained resilient since the last meeting of the MPC in August. Although downside risks from increasingly intense geopolitical conflicts, geoeconomic fragmentation, financial market volatility, and elevated public debt continue to play out. Manufacturing is showing signs of slowdown while services activity is holding up. World trade is exhibiting improvement. Inflation is softening, supported by lower energy prices. Growing divergence in inflation growth dynamics across countries has resulted in varying monetary policy responses. Let me now turn to domestic growth. Real GDP grew by 6.7% in the first quarter of this financial year, that is 24-25. And this was led by a revival in private consumption and improvement in investment. The share of investment in GDP reached its highest level since 2012-13. Expenditure, on the other hand, contracted during the first quarter. On the supply side, gross value added, that is GVA, expanded by 6.8%, surpassing the GDP growth, aided by strong industrial and services sector activities. High-frequency indicators available so far suggest that domestic economic activity continues to be steady. The main components from the supply side, that is agriculture, manufacturing, and services, they remain resilient. Agricultural growth has been supported by above normal southwest monsoon rainfall and better kharif sowing. Higher reservoir levels with good moisture conditions of soil augur well for the ensuing Rabi crop. Manufacturing activity is gaining on the back of improving domestic demand, lower input costs, and supportive policy environment from the government. 8 core industries output fell by 1.8% in August on a high base. Excess rainfall also dampened the production in certain sectors such as electricity, coal, and cement in August. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing, at 56.5 for September remained elevated. The services sector continues to grow at a strong pace. PMI services at 57.7 in September indicates robust expansion. On the demand side, rural demand is trending upwards while urban demand continues to hold firm. Government consumption is improving. Investment activity remains buoyant, with government capex rebounding from a contraction observed in the first quarter of this year. Private investment also continues to gain steam on the back of expansion in non-food bank credit, higher capacity utilization, and rising investment intentions. On the external front, services exports is supporting overall growth. Looking ahead, India's growth story remains intact as its fundamental drivers, namely consumption and investment demand, are gaining momentum. Prospects of private consumption, the mainstay of aggregate demand, look bright on the back of improved agricultural outlook
and rural demand. Sustained buoyancy in services would also support urban demand. Government expenditure of the center and the states is expected to pick up pace in line with the budget estimates. Investment activity would benefit from consumer and business optimism, government's continued thrust on capex, and healthy balance sheets of banks and corporates. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 24-25 is projected at 7.2%, with Q2 at 7%, Q3 at 7.4%, and Q4 7.4%. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 25-26, is projected at 7.3%. The risks are evenly balanced. I would now like to turn to inflation. Now, as anticipated, headline inflation softened significantly in July and August, with base effect playing a major role in the month of July. Food inflation experienced a certain degree of correction during these 2 months. Considerable divergence, however, was observed within the food subgroups. Now, whatever I am saying, I have given a lot of data in the footnote of my statement, which as usual will be uploaded in the RBI website immediately after my statement is, immediately after I complete my statement. For example, I just now said that considerable divergence, however, was observed within the food subgroups. So this is backed up by the data which I have given in the footnotes. And in fact, all the statements that I am making are backed up by supportive data there in the footnotes. So those of you who are interested may like to have a look at them after it is uploaded. Now, deflation in fuel group deepened on softening electricity and LPG prices. Core inflation, on the other hand, edged up in July and August. The CPI print for the month of September is expected to see a big jump due to unfavorable base effects and pick up in food price momentum. And this would be caused by the lingering effects of a shortfall in production of onion, potato, and chana dal, that is gram, in 2023-24, among other factors. The headline inflation trajectory, however, is projected to sequentially moderate in Q4 of the current financial year due to good kharif harvest, ample buffer stocks of cereals, and a likely good crop in the ensuing Rabi season. Unexpected weather events and worsening geopolitical conflicts continue as major upside risks to inflation. International crude prices have become volatile in the month of October, that is in the current month. The recent uptick in food and metal prices, and this is very important, the recent uptick in food and metal prices as seen in the FAO, that is Food and Agricultural Organization, and the World Bank price indices for September, if sustained, can add to the upside risks to CPI inflation. Taking into account all these factors, CPI inflation for 2024-25, that is for the current year, is projected at 4.5%, with Q2 at 4.1%, Q3 at 4.8%, and Q4 at 4.2%. CPI inflation for the first quarter, that is Q1 of next financial year, that is 2025-26, is projected at 4.3%. The risks are evenly balanced. Now, I have summarized our assessment of the domestic growth and the inflation conditions and the outlook as per our assessment. Now, what do this raises the question, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? The developments since the last meeting of MPC in August indicate further progress towards realizing a durable disinflation towards the target.
Despite the near-term upsides to inflation from food prices, the evolving domestic price situation signals moderation in headline inflation thereafter. The agricultural crop outlook is turning out to be favorable with improving prospects of Kharif and Rabi output. These factors could lead to an easing of food inflation pressures, but this optimism is subject to weather-related shocks, if any. Core inflation is likely to remain broadly contained on continuing transmission of past monetary policy actions, unless, of course, there are surprises in global commodity prices. The prevailing and expected inflation growth balance, please mark my words, the prevailing and the expected inflation growth balance have created congenial conditions for a change in monetary policy stance to neutral. Even as there is greater confidence in navigating the last mile of disinflation, significant risks, I repeat, significant risks to inflation from adverse weather events, accentuating geopolitical conflicts, and the very recent increase in certain commodity prices continue to stare at us. The adverse impact of these risks cannot be undermined, cannot be underestimated. It's with a lot of effort that the inflation horse has been brought to the stable, that is closer to the target within the tolerance band compared to its highest or heightened levels 2 years ago. We have to be very careful about opening the gate, as the horse may simply bolt again. We must keep the horse in tight leash so that we do not lose control. Going forward, we need to closely monitor the evolving conditions for further confirmation of the disinflationary impulses. I would now like to turn to the liquidity and financial market conditions. System liquidity remained in surplus during August and September and also in early October, with a pickup in government spending and decline in currency in circulation. Liquidity conditions, however, had turned into deficit for a brief period during the latter half of September, with the buildup of government cash balances on account of tax-related outflows. In sync with the shifting liquidity conditions, the Reserve Bank proactively conducted two-way operations to ensure alignment of interbank overnight rate with the policy repo rate. Across the term money market segments, the yields on 3-month treasury bills, that is T-bills, and commercial papers issued by non-banking financial companies, that is NBFCs, eased, while that on certificates of deposits firmed up marginally. The 10-year G-Sec yield softened in August-September on global and domestic cues, including policy pivot in the United States and also in some major economies. And also, these are not the only factors, but the yields in August-September, I'm talking about the 10-year G-Sec yields, they softened somewhat in August and September due to multiple factors, which would include pivot in the monetary policy of the US and some major economies, improved global investor sentiment, benign domestic inflation, and accelerated fiscal consolidation. The term premium, that is 10-year G-Sec yield minus 3-month T-bills yield, has remained stable in the recent few months. Transmission to the credit market has been satisfactory. Moving forward, the Reserve Bank will continue to be nimble and flexible in its liquidity management operations. We will deploy an appropriate mix of instruments to modulate both frictional and durable liquidity so as to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner. During the current financial year, that is up to 8th of October, that is till yesterday, the exchange rate of the Indian rupee has remained largely range-bound. The Indian rupee also continued to be the least volatile among
peer EME currencies. This was so even during the high volatile episode following the unwinding of the yen carry trade in early August this year. The lower volatility of the Indian rupee reflects India's strong macroeconomic fundamentals and improved external sector outlook. I would now turn to financial stability. The health parameters of banks and NBFCs in India continue to be strong. There has been some recent commentary on the likelihood of stress buildup in a few unsecured loan segments like loans for consumption purposes, microfinance loans, and credit card outstandings. The Reserve Bank is closely monitoring the incoming information and will take measures as may be considered necessary. Banks and NBFCs on their part need to carefully assess their individual exposures in these areas, both in terms of size and quality. Their underwriting standards and post-sanction monitoring have to be robust. Continued attention also needs to be given to potential risks from inoperative deposit accounts, cybersecurity landscape, mule accounts, and a few other factors which we have been stressing and highlighting time and again in the public domain as well as in our interaction with the banks and NBFCs. Now, overall, I would again like to stress that our banking and the NBFC sector, that is the financial sector, remains healthy, resilient, and stable. NBFCs in particular have registered an impressive growth over the last few years. This has resulted in more credit flow to remote and underserved segments, bolstering financial inclusion. While the overall NBFC sector remains healthy, let me re-emphasize, while the overall NBFC sector remains healthy, I have a few messages to certain outliers. First, it is observed that some NBFCs are aggressively pursuing growth without building up sustainable business practices and risk management frameworks, which should be commensurate with the scale and complexity of their portfolio. An imprudent growth at any cost approach would be counterproductive for their own health. Second, driven by significant accretion to their capital from both domestic and overseas sources, and sometimes under pressure from their investors, some NBFCs, including microfinance institutions and housing finance companies, are chasing excessive returns on their equity. While such pursuits are in the domain of the boards and managements of NBFCs, concerns arise when interest rates charged by them become usurious and get combined with unreasonably high processing fees and frivolous penalties. These practices are sometimes further accentuated by what appears to be a push effect as business targets drive retail credit growth rather than its actual demand. I'm not generalizing it for the whole NBFC sector. There are certain NBFCs where it is happening. Bilaterally, we are engaged with them, but I think this is a message which it's important not only for these outliers to keep in mind, but I think this should act as a guidance for the entire sector. Now, the consequent high cost, I was talking about the push effect, that is business targets driving retail growth rather than its actual demand. In that context, I would like to say that the consequent high cost and high indebtedness could pose financial stability risks if not addressed by these NBFCs in time. Third, NBFCs may review their prevailing compensation practices, variable pay, and incentive structures, some of which appear to be purely target-driven in certain NBFCs. Such practices may result in adverse work culture and poor customer service. To sum up, it is important that NBFCs, including MFIs and housing finance companies, follow sustainable business goals, a compliance-first culture, a strong risk management framework, a strict adherence to fair practices code, and a sincere approach
to customer grievances. The Reserve Bank is closely monitoring these areas and will not hesitate to take appropriate action if necessary. Self-correction by NBFCs would, however, be the desired option. Coming to external sector, India's current account deficit, that is CAD, widened to 1.1% of GDP in the first quarter of this financial year, that is 24-25, and this was on account of higher trade deficit. Buoyancy in services exports and strong remittance receipts are expected to keep the current account deficit within the sustainable level. On the external financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have seen a turnaround from the net outflows of $4.2 billion in April and May this year. They have turned from net outflows. In April and May, we had net outflow of $4.2 billion. Now they have now turned to net inflows of $19.2 billion during June to October, and this is the figure till 7th of October. Foreign direct investment, that is FDI flows, remain strong in 24-25, as both gross and net FDI flows have improved in April and July. While external commercial borrowings moderated, non-resident deposits recorded higher net inflows compared to last year. India's foreign exchange reserves have already crossed a new milestone of $700 billion. Overall, India's external sector remains resilient as key external sector vulnerability indicators continue to improve. And when I say key external sector vulnerabilities continue to improve, I have backed it up by the data in the footnote of the statement. On the whole, we remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. I shall now announce certain additional measures. The first relates to responsible lending conduct, levy of foreclosure charges, and or prepayment penalties on loans. The Reserve Bank has taken several measures over the years to safeguard consumer interest. As part of these measures, banks and NBFCs are not permitted to levy foreclosure charges or prepayment penalties on any floating rate term loan sanctioned to individual borrowers for non-business purposes. That is, for purposes other than business. It is now proposed to broaden the scope of these guidelines to include loans to micro and small enterprises, that is MSEs. A draft circular in this regard shall be issued for public consultation. The second announcement relates to discussion paper on capital raising avenues for primary urban cooperative banks, that is for UCBs. The Reserve Bank has undertaken several initiatives in recent years to strengthen the UCB sector. Such initiatives include issuance of regulatory guidelines in 2022 for issue and regulation of share capital and securities by the urban cooperative banks. To provide more flexibility and avenues to the UCBs, that is urban cooperative banks, to raise capital, a discussion paper on capital raising avenues for UCBs will be issued for feedback and suggestions from stakeholders. The third announcement relates to creation of Reserve Bank Climate Risk Information System. Climate change is emerging as a significant risk to financial system world over. This makes it necessary for regulated entities to undertake robust climate risk assessment, which is sometimes hindered by gaps in high-quality climate-related data. To bridge these data gaps, the Reserve Bank proposes to create a data repository, namely the Reserve Bank Climate Risk Information System, or in short, RBCRIS, Reserve Bank Climate Risk Information System, that is RBCRIS. The next announcement relates to UPI, where we are enhancing certain limits for the various transactions. UPI has transformed India's financial landscape by making digital payments accessible and inclusive
through continuous innovation and adaptation. To further encourage wider adoption of UPI and make it more inclusive, it has been decided first to enhance the per transaction limit, in UPI 123 Pay from rupees 5,000 to rupees 10,000. And second, it has also been decided to increase the UPI Lite wallet limit from rupees 2,000 to rupees 5,000 and per transaction limit from rupees 500 to rupees 100. The final announcement relates to introduction of beneficiary account name lookup facility. Let me explain what it means. At present, UPI and Immediate Payment Service, that is IMPS, provide a facility for the remitter of funds to verify the name of the receiver of the funds, that is the beneficiary, before executing a payment transaction. It is now proposed to introduce such a facility for RTGS as well as the NEFT systems. This facility will enable the remitter to verify the name of the account holder before effecting funds transfer to him or her through RTGS or NEFT. This facility will also have the effect of reducing the possibility of wrong credits and frauds. Let me now conclude. Today, the Indian economy presents a picture of stability and strength. The balance between inflation and growth is well poised. India's growth story remains intact. Inflation is on a declining path, although we still have a distance to cover. The external sector demonstrates the strength of the economy. Forex reserves are scaling new peaks. Fiscal consolidation is underway. The financial sector remains sound and resilient. Global investor optimism in India's prospects is perhaps at its highest ever. We are, however, not complacent. I repeat, we are not complacent, especially amidst the rapidly evolving global conditions. The monetary policy action today reflects the MPC's assessment that at the current juncture, it would be appropriate to have greater flexibility and optionality to act in sync with the evolving conditions and the outlook. We stand unambiguously committed to ensure durable alignment of inflation with the target while supporting growth. In the prevailing macroeconomic conditions and the outlook, Mahatma Gandhi's words remain highly relevant. And I quote, "When the method is good, success is bound to come in the end." Thank you. Namaskar. गवर्नर साहब ने अपनी पॉलिसी पेश की। इस पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव है कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन के स्टैंड से अब न्यूट्रल स्टैंड किया गया है और यही सबसे ज्यादा बाजार को पसंद आता दिखा। 51,000 से 51,600 तक की यात्रा करके आया बैंक निफ्टी, और निफ्टी ने भी दिन के दौरान नए हाईज बनाए। उसके बाद तो थोड़े से ठंडे होते दिख रहे हैं। लेकिन बता दूं आपको जल्दी से पॉलिसी की बड़ी बातें, ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 6.5% पर ब्याज दरें स्थिर रखी गई है और इसके पक्ष में जो फैसला आया है, 6 में से 5 सदस्य ब्याज दरें स्थिर रखने के पक्ष में थे। जाहिर सी बात है, एक सदस्य का मन जरूर कटौती का रहा होगा। न्यूट्रल स्टैंड जो आया है इसमें सर्वसम्मति से आया है। 6 के 6 सदस्य ये कह रहे हैं कि अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड जो है वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और जो बड़े बदलाव हैं वो आपके सामने रख दूं। दूसरी तिमाही में जीडीपी और महंगाई दोनों के अनुमान आरबीआई ने घटाए हैं। ये एक बड़ा बदलाव होता दिखा है। अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई की बड़ी कड़ी नजर है। वहां पर जिस तरह की ग्रोथ होती दिख रही है, आरबीआई पूरी तरह से वहां नजरें बनाया है। एनबीएफसी जो अनाप शनाप तरीके से ग्रोथ पर और बड़े प्रॉफिट पर फोकस कर रहे हैं, उसको लेकर आरबीआई ने आगाह किया है। नॉन बिजनेस फ्लोटिंग रेट लोन पर उन्होंने प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाने की अब एक निर्णय लिया। ये एक बड़ा निर्णय आरबीआई की तरफ से आता हुआ दिखा है। महंगाई और ग्रोथ के अनुमान में जो बदलाव हुआ है वो मैं आपके सामने रख दूं। वित्त वर्ष 2025 की ग्रोथ का अनुमान
स्थिर रखा है 7.2% पर और महंगाई का अनुमान भी 4.5% पर, यानी कि पूरे साल भर के लिए ग्रोथ के अनुमान में और महंगाई के अनुमान में कोई बढ़त नहीं किया गया। लेकिन तीसरी तिमाही में यहाँ पर ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है, 7.4% किया गया है और चौथी तिमाही में महंगाई का अनुमान घटाकर 4.2% किया। तो थोड़ा सा महंगाई घटने के आसार आगे दिख रहे हैं। इस तिमाही के बाद आगे के जो डेटा आएंगे उसमें महंगाई के घटने के आसार आरबीआई गवर्नर को दिख रहे हैं और जीडीपी ग्रोथ में भी इस तिमाही के बाद अगली तिमाही से जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के आसार आते दिख रहे हैं। तो ये कुछ एक अच्छे संकेत आपके लिए आते दिख रहे हैं आरबीआई की पॉलिसी के बाद बाजार प्रसन्न है। निफ्टी इस वक्त 0.5% की मजबूती के साथ 25,150 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 51,350 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उतार चढ़ाव के बीच मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आइए हमारे सभी मेहमानों का किया जाए स्वागत। ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी साहब, जानी मानी सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जी, मिरे एसेट मैनेजर से महेंद्र जाजू साहब, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अजय कंवल साहब, कंप्लीट सर्कल वेल्थ के गुरमीत चड्डा साहब हमारे खास मेहमान हैं आज इस पॉलिसी का पूरा विश्लेषण करने के लिए। अतुल जोशी साहब, स्टैंड में बदलाव किया है गवर्नर साहब ने और साथ ही महंगाई और जीडीपी के आंकड़ों में छोटा मोटा बदलाव, पूरे साल भर के लिए नहीं, कैसे देखते हैं आप इस पॉलिसी को? बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। मैं कहूंगा कि मतलब इतनी अच्छी पॉलिसी बहुत सालों के बाद सुनी। क्या बात है। बहुत ही स्मूथली उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि फरवरी में रेट कट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सस्टेन्ड बिलो 4% जो लैंग्वेज वो पिछली दो पॉलिसी से यूज कर रहे थे, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। लैंग्वेज उन्होंने क्या यूज की, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज यूज की है, ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन विथ टारगेट ऑफ 4% while supporting growth। तो ये बहुत ही चेंज उन्होंने, और ये कम से कम 3 से 4 बार वो पॉलिसी स्टेटमेंट में बोल चुके हैं। एक हिंट दे रहे हैं कि फरवरी के लिए आप तैयार हो जाइए, प्रोवाइडेड जो उन्होंने रिस्क बताया कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, कमोडिटी प्राइसेस, एडवर्स मॉनसून इफेक्ट, मतलब वो सारे चीज अगर एडवर्स प्ले नहीं करती है तो फरवरी के लिए उन्होंने स्टेज तैयार करके रखा है। दूसरी चीज जो उनका कॉन्फिडेंस है कि जीडीपी के आंकड़े उन्होंने जो बढ़ाए हैं, उसका जो उनका कॉन्फिडेंस है वो एक्चुअली आ रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ से। अगर हम अगस्त तक के आंकड़े देखते हैं तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 3,75,000 करोड़ था लगभग, और ये साल उन्होंने 75,000 करोड़ कम खर्चा किया है। मतलब सिर्फ 3 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। तो ये जो बैक एंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन और जीडीपी ग्रोथ को एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ेगी इकोनॉमी। तो इसकी वजह से इन्होंने जो पूरा शिफ्ट किया है कि Q3 Q4 में जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगा, 20 बेसिस पॉइंट से Q4 में उन्होंने बढ़ोतरी बताई है। तो इसका जो बेसिक अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर शायद थोड़ा एक्सपोर्ट लेवल पे, मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल रिस्क है, काफी सारे दूसरे रिस्क है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको सपोर्ट करेगी। बाकी के जो भी मेजर्स किए वेरी वेरी गुड, मतलब वो एनबीएफसी के बारे में हो, प्रीपेमेंट के बारे में हो, बहुत ही बढ़िया मेजर्स उन्होंने किए। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में मेरे ख्याल से 75% चांस मैं कहूंगा कि फरवरी में रेट कट हम मान सकते हैं। ओह क्या बात है। और अगर अतुल जोशी साहब तारीफ कर दे पॉलिसी की तो मतलब बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ, मतलब मैं भी सर इतने सालों से आपके साथ पॉलिसी का कवरेज कर रहा हूँ। आप प्रसन्न हुए मतलब तो कुछ न कुछ वाकई में गवर्नर साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। नहीं तो बहुत ही दो टूक राय रखने वाले, एकदम साफ सुथरे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं क्या खराब है और क्या अच्छा है। आज हम भगत साहब को मिस कर रहे हैं, आज भगत साहब छुट्टी पर हैं तो जुड़ नहीं पाए, लेकिन अतुल जोशी साहब ने इसका बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण किया। गुरमीत चड्डा साहब, क्या बाजार के लिए भी वाकई में पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है? इंक्रीमेंटली पॉजिटिव है अनिल जी। और देखिए कितना काम और कंपोजर है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। बॉन्ड यील्ड्स देखिए इंडिया की कितनी स्टेबल रही हैं। आप इसको कंपेयर करिए यूएस बॉन्ड यील्ड से, जो कि सबसे सेफ हेवन माना जाता है। बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी 6-7 पैसे नीचे गिरी है, तो इसका मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट बैंक के ट्रेजरी गेंस में भी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी पिछले एक क्वार्टर में 30-40 पैसा की सॉफ्टनिंग हुई है, और बॉन्ड यील्ड अगर लोअर रहता है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग बिना रेट कट के भी थोड़ा सा रेट कट तो मार्केट को मिला है कि अगर जब आप एक्सटर्नल अपने फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज करते हैं, इन्फ्लेशन अच्छे से मैनेज करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्ड हो रहे होते हैं, करेंसी स्टेबल होती है, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट सिस्टम पे बहुत बड़ा आता है। और मैं कहता हूँ आरबीआई और उसकी पूरी टीम डिजर्व करती है बेस्ट बैंकर का अवार्ड।
और बहुत बहुत अच्छी पॉलिसी थी। मैं इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे मैंने बोला, मैं देखना चाहूँगा पीएसयू बैंक्स पे, कुछ एनबीएफसीज पे थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, उसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने दोबारा अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके कुछ पॉकेट्स पे कंसर्न दिखाया है। पास में भी उन्होंने दिखाया था, जैसे गोल्ड फाइनेंस से रिलेटेड था, आईपीओ फंडिंग से रिलेटेड था, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर से रिलेटेड था। दूसरा, थोड़ा सा फोरक्लोजर चार्जेस में और ट्विकिंग करी है, जो स्पेशली जो फ्लोटिंग रेट लोन है। तो एनबीएफसीज पे थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएशन अब करना पड़ेगा कि किस एनबीएफसीज जो है वो आरबीआई के राइट साइड में है, और काफ़ी सारी एनबीएफसीज अभी लिस्ट भी होनी है। जैसे अभी बजाज हाउसिंग हुआ है, एचडीबी फाइनेंशियल का लिस्टिंग है, क्योंकि वो प्रीमियम लेयर एनबीएफसी है जो आरबीआई चाहता है कि मार्च तक लिस्ट हो। तो ये मैं देखना चाहूँगा। बट ओवरऑल जैसा मैं बोल रहा हूँ, पीएसयू बैंक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस लेवल पे, सारे फैक्टर्स जो हैं उनके फेवर में आ रहे हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बाजार के लिए पॉलिसी का हाल। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी जैसा कि अजय कंवल साहब बता भी रहे थे कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, ज्यादा किसी तरह के कोई डिस्टरबेंस करने की जरूरत नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर इस पॉलिसी को बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से सर? Nil ji, first is confidence on GDP, on making sure that inflation targeting we are on track. I think it's a positive boost for all of us. But important is, right now nothing needs to be changed. So let's keep doing what we are doing. He's shown his stance. मतलब डायरेक्शन उन्हें बता दी कि जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर काटेंगे. And so I think best is we continue doing what we are doing. Economy is doing well, and we wait for the next meeting. Till then, keep doing hard work. ठीक बात है, सब कुछ ठीक चल रहा है और चलने दे उसे। आइए एक बार वृंदा जी से भी राय ली जाए पॉलिसी पर उनकी तरफ से। वृंदा जी, आपको अब कॉन्फिडेंस है कि फरवरी में ब्याज दरें घटेंगी? देखिए, इन्फ्लेशन को लेकर ही आरबीआई गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच जो शुरू करी इन्फ्लेशन को लेकर ही किया, और फिर थ्रू आउट हिज स्पीच वो इन्फ्लेशन के बारे में बोलते रहे, कंक्लूजन में भी वही कहा। तो इन्फ्लेशन को लेके उनकी जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी जो कह रहे हैं ना कि सितंबर तक तो बढ़ सकता है, उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा था, तो उसके बाद इन्फ्लेशन के सॉफ्टन होने की अपेक्षा है। तो इस कॉन्फिडेंस को लेके आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल पे जा, और दूसरी बात की ग्रोथ पे भी वो कॉन्फिडेंट है। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआई सर्विसेज के बारे में भी उन्होंने कहा, और हाई इंडिकेटर इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स के बारे में भी कहा, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रेट्स कट कर रहे हैं। तो इन सब को लेके आरबीआई को इतने कॉन्फिडेंस आया है, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल पे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिस इज नॉट अ टाइम टू बी एडवेंचरस। कॉशन थ्रू आउट हिज स्पीच, कॉशन का अंडरलाइन टोन था कि कमोडिटी प्राइसेस अभी इमीडिएटली बढ़ेंगे, क्योंकि चाइना को लेके जो पॉजिटिव मूड बना है उससे कमोडिटी प्राइसेस पे इंक्रीज आएगी। लेकिन उन्होंने ऑयल के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ऑयल, जहां तक फ्यूल प्राइसेस है, एनर्जी प्राइसेस है, दैट विल रिमेन स्टेबल, बट सम कमोडिटी प्राइसेस कुड गो अप, एंड फूड इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड फाइनली ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विच कुड अफेक्ट इन्फ्लेशन। तो पूरा उनका जो कंसर्न था वो इन्फ्लेशन पे था। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि going forward, we would get space to open up because growth is comfortable. Central banks globally are cutting rates, so that gives us a window of opportunity to also start cutting rates. So मुझे लगता है कि definitely by February, the rate we can expect RBI to move into rate cuts mode, provided that the geopolitical situation does not get out of hand. That's all. बिल्कुल। तो अगर अभी जैसा माहौल बना रहे तो फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। बॉन्ड मार्केट क्या कह रहा है? जाजू साहब जरा समझाएं, वहां पर भी क्या ब्याज दरों में कटौती को लेकर कुछ एक्शन जैसी बातें हो रही हैं? देखिए, पॉलिसी के बारे में मेरा एनालिसिस बोलता है कि जो अनिश्चितता अभी हमारे पास है वो आगे जाके पॉजिटिव वे में रिजॉल्व होगी, और इसके बारे में गवर्नर साहब का मैसेज बहुत क्लियर है। जो उन्होंने स्टांस को चेंज किया अगेंस्ट द ब्रॉडर मार्केट एक्सपेक्टेशन, ये बहुत क्लियर मैसेज दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस कि आगे जाकर जो ट्रैक आएगा वो भारत के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सपोर्टिव होगा। और जहाँ तक रेट कट का सवाल है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, जिस तरह की ग्रोथ और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है, बहुत क्लियर है कि आगे जाके रेट कट्स होने हैं। अब ये रेट कट कब होगी, इसको लेके बहुत सारे अलग अलग अनुमान है। मैं अगर ओवरऑल सबका व्यू देखूं तो सबको लगता है जनवरी मार्च क्वार्टर में जाके कहीं पर रेट कट होगा। हम जो मार्केट प्रैक्टिशनर है, हमारे लिए डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो रेट कट चाहे जनवरी में हो या मार्च में हो,
अभी आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 10 ईयर यील्ड 675 पे आ गया है और हमने यूएस में भी देखा कि 1-1.5 साल तक करीब यूएस यील्ड कर्व इन्वर्टेड रहा। सो मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के रेट कट होगा और वो कॉन्फिडेंस आज गवर्नर साहब के पॉलिसी ने रीइंफोर्स किया। तो जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस और प्रोजेक्शन जो पॉलिसी में दिख रहा है उसके हिसाब से मेरा अनुमान है कि मार्केट फरवरी मार्च तक वेट नहीं करेगा रेट कट का और उसके पहले ही मार्केट में एक्शन है और मार्केट में एक्शन आएगा। तो जहां तक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स का सवाल है, रेट कट के लिए वेट करेंगे तो काफी देर हो जाएगी। मार्केट काफी आगे के प्रोजेक्शंस लेके चलता है तो टाइम जो है फिक्स्ड इनकम को और सीरियसली देखने का वो अभी है, ऑलरेडी 6 महीने से था। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फरवरी मार्च तक तो बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी ब्याज दरों में कटौती को पचा लेगा, तो क्या और हो सकता है उससे पहले ही फिर एक्शन आता हुआ दिखे, तो क्या आपको लगता है कि ब्याज दरें इस फाइनेंशियल ईयर में घटेगी? आपका क्या अनुमान है जाजू साहब, कब से घटना शुरू होंगी? देखिए, अभी हमने इस पॉलिसी के पहले जो हम बात कर रहे थे तो मोर और लेस सबका व्यू था कि इस पॉलिसी में भी स्टांस में चेंज नहीं होगा, लेकिन वो एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि पॉलिसी में स्टांस चेंज हुआ। सो इसका मतलब मेरा ये मानना है कि उसी तरह से जो रेट कट की हम अभी टाइमलाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे पहले ही रेट कट हो जाएगी, क्योंकि यूएस फेड के पास तो बहुत बफर है। उनका रेट कट जो प्रोजेक्शन अगेन पॉलिसी के बारे में डिबेट है कि 25 बेसिस होगा, 50 बेसिस होगा, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक फेड की पॉलिसी साइकिल खत्म होगी वो 200 से 250 बेसिस पॉइंट रेट कट करेंगे। उसी तरह से हमारा अनुमान है कि जब आरबीआई की रेट कट साइकिल खत्म होगी तो कहीं ना कहीं 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होगा। तो आज की जो पॉलिसी है और जिस तरह का रुख हमने देखा, जिस तरह से एक प्लेजेंट सरप्राइज हमको स्टांस चेंज में मिला, उसको देख के मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि दिसंबर में भी हमको रेट कट देखने मिल जाए, बिकॉज अभी हम अक्टूबर में हैं तो और हमारे पास करीब करीब 10 हफ्ते का समय है बाई दिसंबर एंड। और उस माहौल में यदि इन्फ्लेशन का जो बेस इफेक्ट है प्रोजेक्शन वो उतना ऊपर नहीं जाता जितना मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है, और यदि ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहते हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होती है तो मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद रेट कट थोड़ा प्रीपोन भी हो जाए। और हमने देखा कि अभी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी सडनली अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया। सो दैट मेरे को लगता है वो भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेजर्स है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। सो मेरा तो आशावादी अप्रोच है, मुझे लगता है कि शायद हमको फरवरी तक वेट ना करना पड़े, उसके पहले ही हमको रेट कट मिल जाए। तो बढ़िया, चलिए दिसंबर की पॉलिसी में ही ब्याज दरों में कटौती आ जाए तो कहना ही क्या। चलिए, तो जाजू साहब दिसंबर की बात कर रहे हैं, दोनों इकोनॉमिस्ट हमारे अतुल जोशी सर और वृंदा जागीरदार जी कह रही हैं फरवरी में। आइए जरा गुरमीत जी से भी जाने उन्हें कब रेट कट की उम्मीद है। गुरमीत सर, आपका क्या मानना है, कब से होंगी? डेटा डिपेंडेंट होगा अनिल जी, और एक अच्छा इनपुट जो आरबीआई गवर्नर ने दिया वो उन्होंने खारिफ सोइंग के बारे में बात करी, सॉइल मॉइस्चर के बात करी, रूरल रिकवरी के बारे में बात करी। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास अगर रूरल रिकवरी देखने को मिलती है और ओवरऑल इन्फ्लेशन, स्पेशली जो फूड इन्फ्लेशन है और इनपुट कॉस्ट है उस पर अगर थोड़ा कंट्रोल होता है तो दिसंबर में रेट कट होना चाहिए। और मैं ये भी चाहूँगा कि आरबीआई ये भी नहीं चाहेगा कि वो बहुत बिहाइंड द कर्व हो, क्योंकि ग्लोबली रेट कट साइकिल स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा सॉफ्टनिंग है ग्रोथ में। आप जीएसटी का कलेक्शन देखिए, गवर्नमेंट का भी स्लो डाउन है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, आपको अभी अर्निंग स्टार्ट होगा अनिल जी, वहाँ पे भी स्लो डाउन दिखेगा। एफएमसीजी कंपनी ने ऑलरेडी बात करी है इस बारे में। तो मेरा ये मानना है कि बहुत बिहाइंड द कर्व हो जाएगा फरवरी मार्च, और मैं भी चाहूँगा, मैं जाजू जी से अग्री करूँगा कि दिसंबर में ही रेट कट आए। तो बाजार के दिग्गज चाहे वो डेट के हों या इक्विटी के दिसंबर में चाहते हैं। आइए बैंक और बैंकिंग सेक्टर क्या चाहता है और क्या उम्मीद है? अजय कंवल साहब, आप बताएं सर, आपको क्या लगता है इस तरह के माहौल में दिसंबर में ही कटौती हो जाएगी या फरवरी या और भी लेट? अनिल जी, टफ है बोलना, और सी फ्रैंकली हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें डायरेक्शन मिल गई है। अब वो दिसंबर हो या फेब हो, आई डोंट थिंक सो इट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर, सो टू से। बट आई थिंक बेस्ट टू नो इज दैट आवर रेगुलेटर हैज अ dry powder. He will respond when required, and he has guided the economy through a very tough time. So I think we should take the cue now. Now timing may not be the most important thing. I think direction was important, we've got it.
And yeah, so I don't want to predict, but I think we should already take the cue. बिल्कुल, दशा तो मिली गई है, डायरेक्शन मिली गया है, दिशा मिल गई है बाजार को, और बाजार अब डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 25,200 के पार निकलता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट का बड़ा उछाल, 650 पॉइंट का उछाल आता दिख रहा है। अब 51,700 पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। मिड कैप शेयरों में 4 अंकों की बढ़त होने की तैयारी में दीप 900 पॉइंट। और आज की तेजी की क्रेडिट गवर्नर साहब को, सुबह हम बात कर ही रहे थे कि आज गवर्नर साहब की तरफ से पॉजिटिव सरप्राइज आने के आसार बन रहे हैं। ब्याज दरों में भले ही ना घटाई हो, लेकिन घटाने के सारे संकेत बिना बोले सब कुछ दे दिए उन्होंने। पॉलिसी में जो स्टैंड में बदलाव किया है और जिस तरह की बेहतरीन पॉलिसी, और सबसे बड़ी बात अतुल जोशी साहब ने आज पॉलिसी को थम्स अप दिया है और उनकी तरफ से थम्स अप आना बड़ी बात है। तो ये सब कुछ होता दिख रहा है। अब जाजू साहब, आपने कहा भी कि जिन लोगों को फिक्स इनकम में पैसा लगाना है वो इंतजार ना करेंगे कब ब्याज दर घटेगी, बॉन्ड मार्केट उससे पहले एक्ट कर जाएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या है आपकी राय? क्या आपको लगता है कि इस वक्त सही मौका है डेट फंड्स में पैसा लगाने का? किस तरह के डेट फंड्स ज्यादा सही रहेंगे? लॉन्ग डेटेड फंड्स, गिल्ड फंड्स, बॉन्ड फंड्स, क्या देखते हैं आप? देखिए, डायरेक्शनली तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो ड्यूरेशन के तरफ ही फर्क ध्यान जाएगा। हालांकि देखिए, रिजर्व बैंक के पास रेट कट करने का जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है, बिकॉज जब फेड रेट हाइक्स कर रहा था तो आरबीआई ने हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखा और उतना रेट नहीं बढ़ाया जितना फेड ने बढ़ाया। तो फेड जितना रेट काट सकता है उतना ऑब्वियसली आरबीआई के पास रेट कट करने का स्कोप नहीं है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब साइकिल खत्म होगी तो कहीं ना कहीं 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स एट मैक्स रेट कट होगा। और दूसरी चीज है कि मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहे हैं, तो आप यदि 6% की टर्मिनल रेपो रेट लेते हैं तो 10 ईयर यील्ड समवेयर अराउंड 660 675 एक फेयर वैल्यू लगता है। मोमेंटम में और भी नीचे आएगा, लेकिन लास्ट ईयर में जो हमारे पास कॉर्पोरेट क्रेडिट पिकअप हुआ, जो लिक्विडिटी टाइटनेस थी, उसके कारण कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड्स बहुत अभी अच्छे लेवल पे है, दे आर लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि जो 3 से 5 साल वाले फंड है जिसमें हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड भी है, वहां पर बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है। कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड का हमारा भी इन्वर्टेड है, जो 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड है वो करीब करीब 730-35, और जो 3 साल वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो करीब 775 पे चल रहे। तो एक जो 2 से 3 साल में हम पॉइंट कर में कॉर्पोरेट क्रेडिट में बिकॉज ऑफ दी पिकअप इन क्रेडिट एटसेट्रा, तो अभी जैसे एनबीएफसी पे भी जितने मेजर आ रहे हैं, इस क्वार्टर का जब नंबर आएगा तो हम देखेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ स्पेशली इन द रिटेल सेगमेंट, अनसिक्योर्ड सेगमेंट, माइक्रो फाइनेंस बहुत सिग्निफिकेंट स्लो डाउन आप नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो वो सेगमेंट में मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस जो इन्वेस्टर्स के पास लॉन्ग टर्म रिस्क एपिटाइट है और इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो उनके लिए गिल्ड फंड अभी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। तो एक बास्केट आप बना सकते हैं जो 3 से 5 साल वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले फंड है और एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले फंड है। इन दोनों के बीच में मुझे लगता है कि जो भी डेट के ऑप्शन है उसमें से सबसे अच्छा यील्ड इस कॉम्बिनेशन से निकलेगा। परफेक्ट। तो गिल्ड फंड्स और साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं वो आप खरीद कर निवेश करें। अगर आप डेट मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। इक्विटी मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने की जरूरत है, चड्ढा साहब जरा बताएं आप। तो मैं अग्री करूंगा कि एक तो मैं बहुत समय से बोल रहा हूं, इनफैक्ट हमारी अनिल जी जब चर्चा हुई थी तब 10 ईयर बॉन्ड 7.25 पे था, अभी 6.75 के आसपास है। तो पिछले अगर आप किसी ने 8 महीने साल पहले भी लगाया होगा तो उसका भी डबल डिजिट रिटर्न है बॉन्ड में, शायद निफ्टी के बराबर ही होगा। दूसरा मुझे लगता है थोड़ा एलोकेशन गोल्ड के लिए भी करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि थोड़ा मल्टी एसेट अप्रोच रखिए। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, डॉलर थोड़ा वीक होगा तो यूजुअली स्ट्रांग होता है कमोडिटीज़ के लिए। पीएसयू बैंक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा रूरल रिकवरी पे भी फोकस करना चाहूँगा। ह्यूंडई आईपीओ एक थोड़ा सा ऑटो स्टॉक्स में जान ला सकता है, थोड़ा सा करेक्शन आया है ऑटो स्टॉक्स में, और ह्यूंडई का आप ग्लोबली देखिए तो 5 या 6 का पी होता है। तो वो होप करेंगे कि इस आईपीओ से इस रिकॉर्ड को बदले। तो मैं थोड़ा सा ऑटो, स्पेशली जो 4 व्हीलर कंपनी जहाँ पे करेक्शन अच्छा है, एमएनएम ने हालांकि बहुत अच्छा किया है, नंबर 3 स्पॉट पे आ गया है। टाटा मोटर्स में थोड़ा करेक्शन आया है, तो थोड़ा ऑटो स्टॉक्स पे निगाह रहेगी। और कुछ हद तक मैं चाहूँगा थोड़ा जो बाकी पीएसयू पैक है, डिफेंस स्टॉक्स है, रेलवे स्टॉक्स हैं, 20, 25, 30% करेक्शन आया है। और जो डिफेंस इन्वेंट्री है अनिल जी, वो लगभग 30-40 साल के लो पे है, क्योंकि इतनी जगह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं।
तो हो सकता है आपको फ्रेश ऑर्डरिंग भी दिखे डिफेंस में। और एक जो हम ऑफसेट क्लॉज है उसमें भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट करीबन 50-60 हज़ार करोड़ है। तो डिफेंस में अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिलेक्टिवली। रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छा करेक्शन आया है, तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्सपोजर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक बाजार के लिहाज से भी। आइए आप सभी मेहमानों से विदा लेने का वक्त है। अतुल जोशी सर, वृंदा जागीरदार जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कंवल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र जाजू साहब और साथी गुरमीत चड्ढा साहब का बहुत बहुत आभार आज हमारा साथ देने के लिए पॉलिसी में, और बाकी हमारे साथ सभी खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, विश्वेश जी, जय ठक्कर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए। पॉलिसी का ये खास कवरेज यही समाप्त करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं कि 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस वक्त आपको नजर आएगा, 650 पॉइंट ऊपर आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा। सेंसेक्स में 600 अंकों का उछाल है। आज के स्टार परफॉर्मर मिड कैप शेयर 900 पॉइंट ऊपर है, स्मॉल कैप शेयर 300 पॉइंट ऊपर है। यहाँ पर दमदार खरीदारी और तेजी बनती हुई दिख रही है आज आपके लिए। शानदार, बहुत ही बढ़िया रहा। और आरबीआई गवर्नर साहब ने अब बाजार में भरा है जोश। आज एकदम सही वक्त पर, जब यही बात है खास है, जब आती है तभी सारी खबरें बड़ी अच्छी तरीके से आती है एक साथ, और जब मार पड़ती तभी सारी एक साथ आती है। तो आज अच्छी खबरों का दिन है और ऐसे में दमदार एक्शन बाजार में आपके लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद। Really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। There comes a time when your heart calls for you to arise. Plant your feet solid into the ground. Decide your own limits. And then break right through them. Become something more. It's my time to rise. मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस, फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा मम्मा हमें मिस कर रही होगी ना? Volkswagen। क्रिकेट का स्ट्रिक्ट रूल है कि बैट का एज 4 सेंटीमीटर से थोड़ा भी चौड़ा नहीं हो सकता। मतलब इतना, इससे थोड़ा भी चौड़ा हुआ तो डिस्क्वालीफाइड। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए भी रूल्स कुछ ऐसे ही हैं। कार्ड मशीन से 4 सेंटीमीटर, मतलब इतना पास होना चाहिए। इससे थोड़ा भी दूर हुआ तो नो पेमेंट। मास्टर कार्ड कॉन्टैक्टलेस, इसकी सेफ्टी है मैचलेस। मास्टर कार्ड, पेमेंट्स का पावर प्ले। आग लग जाएगी। रिलैक्स, नहीं लगेगी। ग्रीन प्लाई का सुपीरियर फायर सेफ प्लाई, सेफ इंटीरियर्स का रिप्लाई। सपनों की आगाज पे आंखों में चमक लिए, त्योहारों की रौनक में अपनों को साथ किए, पैरों की थिरक पे देखो खुशियों का स्वाद चखे। अपने सपनों को दे नई उड़ान और त्योहारों को बनाए कुछ खास ग्रेट होंडा फेस्ट के साथ। सभी देशवासियों को रीजेंसी अवाना कल्याण नेक्स्ट की ओर से नवरात्रोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ले, तू भी ले। No, just 20 more points. Yes, what a kill, bro. Combat trading? Nah, Neo trading. Real action is happening in the stock markets. Download the Kotak Neo app and start Neo trading. जो तेज हैं, वो आगे हैं. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हंडे सुपर डिलाइट डेज फेस्टिव डील्स के साथ सब कार प्रवेश मना रहे हैं और यहाँ आप सिर्फ मिठाई खा रहे हैं।
आप भी उठाओ इन फेस्टिव डील्स का फायदा। हंडे सुपर डिलाइट डेज के साथ आप भी कार प्रवेश करो, पर थोड़ा जल्दी। फेस्टिव सीजन के बाद नए नेवर बिफोर ऑफर्स मिलेंगे, ना मिठाई। जैसे आप खाने में भरपूर प्यार डालते हैं, वैसे ही बड़े प्यार से चुनिंदा इंग्रेडिएंट से फॉर्चून बनाता है। तेल से लेकर आटा, दाल से लेकर चावल, बेसन से लेकर सोया बड़ी और भी बहुत कुछ। Sir, how was the test drive? Badass. New Seltos. Tech is now badass. Kia, movement that inspires. ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन ऐप स्मूथली चलता है। मल्टीपल स्क्रीन? Nah. One click? Yes. एंजल वन ऐप से इन्वेस्टिंग है फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आप कब डाउनलोड कर रहे हो? Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence to be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free to think big and achieve bigger. Towards a future made perfect and be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good. सपनों की आगाज पे आंखों में चमक लिए, मासूमियत की खुशबुओं से मन में उल्लास लिए। हम भी तो अब चल पड़े हैं, दिल में त्योहार लिए। अपने सपनों को दे नई उड़ान और त्योहारों को बनाए कुछ खास ग्रेट होंडा फेस्ट के साथ। जैसे आप खाने में भरपूर प्यार डालते हैं, वैसे ही बड़े प्यार से चुनिंदा इंग्रेडिएंट से फॉर्चून बनाता है। तेल से लेकर आटा, दाल से लेकर चावल, बेसन से लेकर सोया बड़ी और भी बहुत कुछ। स्टॉक मार्केट, हाँ? How do you plan to trade? Handles पर लूंगा छेद। What's your strategy? ग्रुप चैट्स है ना रे, Oh yeah. तू कैजुअल है Repo। तू मार्केट में क्योंकि जब सीरियस बनोगे तभी मार्केट का शेर बनोगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सभी देशवासियों को रीजेंसी अवाना कल्याण नेक्स्ट की ओर से नवरात्रोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप खाने में भरपूर प्यार डालते हैं, वैसे ही बड़े प्यार से चुनिंदा इंग्रेडिएंट से फॉर्चून बनाता है। तेल से लेकर आटा, दाल से लेकर चावल, बेसन से लेकर सोया बड़ी और भी बहुत कुछ। स्टॉक मार्केट, हाँ? How do you plan to trade? Handles पर लूंगा छेद। What's your strategy? ग्रुप चैट्स है ना रे, Oh yeah. तू कैजुअल है Repo। तू मार्केट में क्योंकि जब सीरियस बनोगे तभी मार्केट का शेर बनोगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Sir, how was the test drive? Badass. New Seltos. Tech is now badass. Kia, movement that inspires. आउट 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 प्लीज। अभी मत गिर गुरु। सिक्स मोर। भाग और भाग। यस Bro, who are you supporting? I am Neo Trading. Real action is happening in the stock markets. Download the Kotak Neo app and start Neo Trading. जो तेज हैं, वो आगे हैं. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सपनों की आगाज पे आंखों में चमक लिए, मासूमियत की खुशबुओं से मन में उल्लास लिए। हम भी तो अब चल पड़े हैं, दिल में त्योहार लिए।
अपने सपनों को दे नई उड़ान और त्योहारों को बनाए कुछ खास ग्रेट होंडा फेस्ट के साथ। देश, दुनिया, बाजार या कारोबार, खेल, फैशन, फिल्म या सरकार, दिन भर की हर हलचल का साथ डिनर के साथ देखिए खबरें धुआंधार। बदल जाएगा खबरों को देखने का तरीका। देखिए खबर चालीसा रात 8:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। सपनों की आगाज पे आंखों में चमक लिए, त्योहारों की रौनक में अपनों को साथ किए, पैरों की थिरक पे देखो खुशियों का स्वाद चखे। अपने सपनों को दे नई उड़ान और त्योहारों को बनाए कुछ खास ग्रेट होंडा फेस्ट के साथ। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि केशकांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट।